Assalamu alaikum, ladies and gentlemen, boys and girls. Welcome to a fresh episode of Cricket Clinic. हम जानते हैं कि it's been a while, there's been a hiatus. कुछ अरसे तक हम आपके साथ नहीं शामिल हो सके. उसकी different reasons हैं. एक तो ये है कि we wanted to focus on international tournaments और उस वक्त PSL था. We are focusing on more domestic and franchise tournaments. But now, as things are shaping up, we felt it was high time to connect back with you and start discussing Pakistan cricket and share our passion and eagerness of Pakistan cricket with you. So again, as always, I have Mudassir Mirza and Asif Ahmed, our two guest panelists here. और आज की जो हमारी एपिसोड है उसके बेसिकली दो मेन पॉइंट्स हैं, दो थीम्स हैं जिसके हम बात करेंगे. पहले तो हम ये क्लैरिफाई करना चाहते हैं बिकॉज अपकमिंग वर्ल्ड कप इन अक्टूबर इज द ओडीआई वर्ल्ड कप. सो अब हमारा जो गोइंग फॉरवर्ड द एम्फोसिस वुड बी ऑन ओडीआईज वर्सेस टी20. सो इसी को सामने रखते हुए अभी जो हमारे एज दिस एपिसोड इज गेटिंग रिकॉर्डेड हमारी दो ओडीआई गेम्स हुई हैं, उसको हम रिव्यू करेंगे और प्लसेस माइनसेस पाकिस्तान टीम की, क्या अच्छा हुआ क्या बुरा हुआ, क्या चीज़ें हम इम्प्रूव कर सकते हैं उसमें, उसके बाद में बात करेंगे. और दूसरी हम बात करेंगे ओवरऑल बिग पिक्चर कि क्या चीज़ें हमें इम्प्रूव करनी चाहिए, क्या चेंजेस हम प्रपोज करते हैं इन टर्म्स ऑफ टीम सिलेक्शन, इन टर्म्स ऑफ बैटिंग ऑर्डर, इन टर्म्स ऑफ स्ट्रैटेजी टू मेक आवरसेल्फ बेस्ट प्रिपेयर्ड फॉर द अपकमिंग वर्ल्ड कप. सो सबसे पहले फर्स्ट टू गेम्स को रिव्यू कर लेते हैं. Obviously no brainer, Fakhar Zaman, amazing form, back-to-back centuries. But I'll just have my panelists weigh in and talk about what did they find, Pakistan team के बारे में, क्या उनको सबसे चीज किस चीज ने सबसे ज्यादा इम्प्रेस किया और कहाँ हम इम्प्रूव कर सकते हैं. आसिफ, अगर आप स्टार्ट करना चाहें. हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, भाइयों बहनों, everyone in between. That actually has deep connotations, logical, but still, anyways, glad to be back. Sorry that we were absent. Really, it was just one maiden over played by Iftikhar that led to the long gap that we've had, but we'll talk about that some other time. So look, there's a lot to talk about with the ODIs, these first two. Before talking about Fakhar, one thing I think which is really good to mention is that we generally are a team that plays well when we're defending. And the fact that we won the toss and decided to chase big totals, I think that was good. If that's what Babar was thinking, it's good. It shows that we're trying to win both while defending and while chasing. Fakhar, everybody knows I've been a huge fan of his from the very beginning, and there aren't enough superlatives, honestly. And he doesn't have the grace, he doesn't have the style, he doesn't have the flair of a Sayyid Anwar, but the numbers bear it out. I mean, he absolutely is the opener for us. So, just a few numbers. He's the second fastest ever to reach 3,000 runs, the fastest ever Pakistani. There are only 10 batsmen in all of international cricket who have an average of 45 after scoring 1,000 runs with a strike rate of 90. He's one of them. He's the only Pakistani who's done that. If you look at any batsman who has had 3,000 runs or higher, a higher average and strike rate at the same time, only A.B. de Villiers passes him. That's nobody else. That speaks volumes. Of his 10 centuries, 7 of the centuries are outside of the subcontinent. And in fact, he's not someone who just scores centuries. He scores big centuries. 180 not out the other day, 193, 210. If you look at the history of Pakistan cricket, there are very few batsmen who actually do big centuries. You have your Javed Miandad, Yunus Khan, Inzamam al-Haq, that's it. And now, Fakhar, again, it's ODIs, but still chasing 300. His average is 83. That's a huge thing. That's a huge thing to see. And, again, one of the criticisms of Fakhar, obviously, is people say he's inconsistent, but the guy has an average of 49.7 in ODIs. So that shows consistency. Yes, you'll have ups and downs here and there, but to have an average of 49.7 speaks to his consistency in this format. So for me, that's a huge thing. Obviously, there are other aspects of the team that can be, we can appreciate in some negatives, but for me, it starts and ends with Fakhar. The only thing that worries me a little bit is I hope he's not peaking too early, because when he is out of sorts, we've seen in the last year even, he can look really off. So we really need to make sure that what he has, he maintains it and, builds on that for the World Cup.
बिल्कुल, और फखर के लिए आई थिंक एक और चीज ये है कि the ODI format seems to be really suiting him because he has a little bit of time to get his eye in Mhm. and accelerate later on, whereas T20 के अंदर we've seen sometimes he struggles to find the right balance between aggression and stability. So Yeah, इसके अंदर that little bit of flexibility बिल्कुल. is and the numbers speak for themselves. Yeah. मुदस्सर आप ऐड करोगे कुछ इसमें? So obviously you talked about फखर, but overall pluses minuses besides फखर. आई थिंक काफी पॉजिटिव है कि बड़े स्कोर चेस किए हैं. 288 पहले गेम में और सेकंड में 336. अगर आप हिस्टोरिकली देखो तो वी आर रियली बैड चेजर्स. अब तो अभी ओडीआई में थोड़ा गैप आ गया, मगर ये जो जो हमारी टीम है पिछले 3-4 साल से, पिछले वर्ल्ड कप से, तो दे हैव बीन चेजिंग गुड स्कोर. अभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दे चेज इवन हायर स्कोर लास्ट ईयर इन लाहौर. तो आई थिंक जितना चेस करें होम सीरीज में उतना बेहतर है. अगर वर्ल्ड कप में कभी जरूरत पड़े, जिस तरह 96 में हुआ था हमारे साथ, तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड साइन कि बाबर, फखर और ये जो इमाम, इनका चेजिंग रिकॉर्ड आई थिंक इज मच बेटर देन एनी प्रीवियस टीम. और आसिफ भाई जिस तरह कह रहे थे फखर का, तो मजे की बात ये कि वनडे में तो ही इज वेरी कंसिस्टेंट. आई मीन ही इज नाउ एवरेजिंग क्लोज टू 50. Yeah. T20 में मेरा आर्ग्यूमेंट ये से आपने 2 साल से तो ओपन करा नहीं रहे. आप वो कैलेंडर में ही ओपन करता है. ही वाज द हाईएस्ट स्कोरर लास्ट ईयर. तो आई वुड आर्ग्यू कि T20 में अगर इसको कंसिस्टेंटली कराएं, ठीक है, ही विल नॉट बी एज कंसिस्टेंट एज रिजवान, मगर when he clicks we might end up winning the match most of the time. ऐसा नहीं होगा कि फकर ने 50 की और हम मैच हार गए. I think it's very clear when you see him in T20s that 1, 2, 3 dot balls ke baad he panics a little bit. Yeah. And I think ODI format, and I agree, but I think in ODI format he knows he's got time. He'll play a few balls and then he'll rotate strike, and he doesn't jump and panic, because when he panics he loses his timing completely. He loses it. And you can see it's very clear. Bakhar's mind is not hard to read when he's batting. You can see exactly ki unke zehn mein kya ho raha hai, and I do feel he feels a lot of dot ball pressure in T20s. In ODIs not as much, and that you can tell. अच्छा, I guess it's okay. वो वन डाउन भी he's performing okay in T20. वो वर्ल्ड कप में थोड़ी बैड लक हुई कि he was unfit, और शान खेल गया. अच्छा खेला शान, was a top scorer, मगर जैसे फाइनल में जब एक्सेलरेट करना था he got out. तो I think वो big hitting was missing. Yeah. तो I'm glad कि he recovered from the knee. उसकी इंजरी थी, तो 180 रन पे वो आउट ही नहीं हुआ. तो लग रहा है कि उसका फिटनेस तो ये सुपर फिट. बिल्कुल. फिटनेस तो अच्छी है उसकी. नाउ गोइंग बैक टू ओडीआई फॉर्मेट, उसमें एक कुछ ये भी बात हो रही है कि वी सीम टू बी बिट टॉप हैवी. हमारे जो फर्स्ट टॉप 4 बैटर्स हैं, और उसमें मैं रिजवान को भी शामिल कर लेता हूँ. सो उसमें इमाम हो गया, फखर, बाबर और रिजवान. इसके अंदर हम बहुत रिलायंट हैं. अभी जो पहली 2 गेम्स हैं इसके अंदर बेसिकली इन चारों ने ही मिलकर स्कोर्स किया है. पहली गेम के अंदर जब ये आउट हुए हैं, हमारा ओपनर्स आउट हुए हैं और बाबर आउट हुआ है, तो देयर वाज अ लिटिल बिट ऑफ अ हिकअप एज वेल, बट वी वर सो फार हेड इन द गेम दैट वी फिनिश इट. इसके बारे में आप क्या कहोगे कि हम थोड़ी वीकनेस की भी बात कर लेते हैं? मिडिल ऑर्डर डज सीम अ लिटिल बिट ऑफ वीकनेस टू यू, और उसमें इफ्तिखार के आने से क्या थोड़ी इंप्रूवमेंट आ सकती है, और इफ्तिखार के अलावा किसको होना चाहिए मिडिल ऑर्डर में? यार जब वर्ल्ड कप टीम जा रही थी हमारी, तो सब ने हम लोग ये मजाक कर रहे थे कि देयर इज नो मिडिल ऑर्डर. वो शान भी टेक्निकली ओपनर है, और इफ्तिखार अकेला था जो ही इज अ जेन्युइन मिडिल ऑर्डर. खुशदिल को खैर इतना खेला नहीं. हैदर अली को हम छेड़ते ही रहे जब से वो आए. तो वही प्रॉब्लम. तो शुक्र है कि शान और इफ्तिखार फिर भी रन कर गए. 1-2 जिम्बाब्वे वाला मैच इसी वजह से हारा है कि मिडिल ऑर्डर ठीक नहीं था हमारा. तो अभी भी यही है कि ये थोड़ा इस मैनेजमेंट का ड्रॉबैक है कि वो ओपनर्स पैक करे जा रहे हैं. जैसे आई डोंट एग्री कि आप साइम और शान को चौथे पे कभी खिला भी रहे हो. यू हैव टू फाइंड प्रॉपर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन. वो उसमें वो मिडिल ऑर्डर इज वेरी वर्सेटाइल के दे रोटेट. जिससे इंतजाम था कि आप रोटेट भी करो, ब्लॉक करो, यू कैन बिल्ड एन इनिंग एंड देन यू कैन हिट अ बिग शॉट्स इफ नीडेड. अनफॉर्चुनेटली जो हमारी अब जितने बैट्समैन हैं वो T20 में या ODI में हम डिपेंड करें टॉप 3 में, विच इज फाइन. अब तो टाइम नहीं है, तो अभी भी
जो कोलैप्स हुए हैं न्यूजीलैंड के T20 में, टीम में इफ्तिखार ने 30 रन ही किए, मगर he had partnership with Rizwan and Babar जब उन्होंने 100 किए. तो we need to figure out कि कुछ genuine middle order होने चाहिए यहाँ पर 2 at least. तो इस टीम में middle order की कमी लग रही है, और Rizwan is stepping up at number 4, but we need somebody at 5 and 6. I don't think कि आप bowler को खिला दो या opener को चौथे पांचवे पे खिला दो, it's not going to work out. Yeah, no, I agree. उसमें for me, Iftikhar की lack of inclusion was surprising to begin with. I'm happy he's back, but मेरे लिए it was surprising कि why he hadn't been included in the first place. When you had Agha Salman, and we can talk about him, or even Haris Sohail, जो कि is not been playing consistently, and then you have a guy like Iftikhar who has been playing great white ball cricket, excluding that one maiden over that Asif referred to. So it's made surprising. I hope they play Iftikhar for the remaining 3 games. Bowling के बारे में क्या कहेंगे? There's a famous French saying, I just want to say a famous French saying, plus ça change, plus c'est la même chose. The more that things change, the more they stay the same. If you go back to our very, very, very first episode of Cricket Clinic, what did we talk about? Middle order. And we said, you have Haider Ali, you have Khushdil Shah, you have Iftikhar. It's the same problem, whether it's T20s or one-day internationals. We are top-heavy. We know who our bowlers are to some extent. We know who our all-rounders are. We don't have a middle order. So, yeah. But, Agha, you were saying. Yeah, मैं थोड़ी अब चूँकि weakness की, yes, we have won 2 games, which is great, but this was, in all fairness, a B, or some would even say a C New Zealand team. तो उसमें इस batting के साथ the New Zealand B team making 330 odd runs in the second one, पहले के अंदर भी 288. I know we're talking about Pindi, which is historically a high scoring ground, but are you satisfied with our bowling, especially our death bowling, or do you think इसके अंदर हमें कुछ करना पड़ेगा, maybe make a few changes? Shaheen is great at the top, but his death bowling is always a question mark. Haris Rauf के साथ भी यही है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? Naseem, I felt was great, but overall bowling के बारे में क्या कहेंगे? Are you guys satisfied या कुछ changes उसके अंदर होनी चाहिए? Pace bowling especially. Yeah, so it's tricky because, Naseem has been very good in the last 2 matches. First of all, bowling is our strength. We know that. And we go into every match thinking, you have Naseem, Haris, and Shaheen Afridi. We should be on top of every match. And I agree. Yes, this is an easy wicket. Yes, this is a dead pitch, but we should be restricting this team to fewer runs, And it's difficult because Kabhi Kabar Haris Rauf is the one who, with the slower balls gets it done. Sometimes it's Naseem, sometimes it's Shaheen. Unfortunately, all 3 of them are very good, but they have some highs and lows. They don't have defined roles. Like, for example, Zaman, who is your end guy, So that's tricky because on any given day, any one of them could be brilliant, but on any given day, any one of them can leak runs. Right now, Naseem has been good the last 2 matches, but who knows? Next match, he may be very good at the front end. So I think it's a tricky problem to have. I know you're talking about pace, but one thing I wanted to bring up about spin is Shadab. This is what happened before the last World Cup. He is just looking totally off. Lacks any venom, lacks any penetration, leaking runs. Batting is really not what we thought. And it'd be nice to have a spinner who can come in the middle overs, come even towards the end overs, and just give some variation. That's where Iftikhar comes in. That's where someone like an Imad Wasim, who would be nice to have. I don't know much about Rana, is it? Osama. I have not seen him much, but that would be someone to try. But wait, as far as the pace is concerned, I think we do need to have a specialist closer, someone like a Zaman, who what you're going to get from him every time. You know that he's going to bowl his Yorkers. It's not going to be like Shaheen Afridi, who you're all excited for, and then he gives up 3 sixes and we lose the World Cup. It's not going to be like Haris Rauf, who is your guy you depend upon, and then he gives up 16 runs to Kohli. You just never know. They're all brilliant. I'd back any one of them on any given day, but at the same time, it seems like they can also lose it on any given day. And someone like Zaman, I think, who is consistently bowling Yorkers, that's someone you need to somehow put in the mix for the closing. And Zaman, interestingly, is not part of our ODI squad right now. Ahsanullah is, and Ahsanullah was tried. He didn't have 2 good games.
For me, yes, death bowling में Zaman should be someone who should be considered. यार वर्ल्ड कप में भी यही प्रॉब्लम हुआ था जब वो खैर ऑस्ट्रेलिया था तो वी हैड अ लग्जरी कि हमने इंडिया वाले गेम के बाद और बाद में मोहम्मद वसीम को ऐड किया था तो ही कीप्स इट सिंपल वो ओल्ड स्कूल बॉलिंग कर रहा है डेथ में फुल रखता है यॉर्कर और थोड़ा उसका बॉल रिवर्स होता है आई नो वो नई क्रिकेट में देयर ट्राई पीपल ट्राई वाइड यॉर्कर्स या बाहर ठीक है मगर मेरा तो ख्याल है वो वसीम इसलिए बच जाता है कि ही जस्ट कीप इट सिंपल और जमान का भी यही है वेरिएशन बोथ हैव गुड यॉर्कर्स वेरिएशन और थोड़ी रिवर्स होती है वसीम की तो फिर वही प्रॉब्लम दोबारा होगा जब 3 बॉलर खिलाएंगे नसीम और शाहीन खास तौर पे दे आर वेरी गुड विद द न्यू बॉल डेथ में प्रॉब्लम होती है हारिस लोग कहते हैं आई मीन बट यू नो वी हैव लॉस्ट क्रूशियल मैचेस लाइक इंडिया वाला मैच हारे थे वर्ल्ड कप सेमीफाइनल हारे हैं एशिया कप में भी सब भी पिटे हैं तो दे आर नॉट कंसिस्टेंट तो मुझसे अगर पूछे तो जमान या वसीम टाइप के बॉलर बहुत क्रूशियल होते हैं डेथ के लिए वही मैच में बड़ा प्रॉब्लम होता है जब डिफेंड कर हाँ यार यही तो मसला है अब या वी हैव टू पिक एटलीस्ट उनको एक्सपोजर तो मिलना चाहिए ना सर अभी आपने एक मैच के अंदर आपने ड्रॉप किया शाहीन को और एहसानुल्लाह को गेम्स दिए हैं तो एटलीस्ट आप ट्राई करो उसके अंदर ये भी हो सकता है this is the time to try this is the time to try. You don't do it now then when are you going to do it एग्जैक्टली तो आई थिंक रोटेशन ये चीज अच्छी है कि मुझे लग रहा है मिकी आर्थर्स ने कुछ बोला है इनको कि पहला मैच के बाद ही 3 चेंजेस हुई हैं तो वर्ल्ड कप से पहले ये प्लेयर रोटेट करने पड़ेंगे एहसानुल्लाह जमान बॉलिंग में उसामा अमीर स्पिन में और बैटिंग में एक आध तो वी हैव टू रोटेट टू फिगर आउट के हु आर द बेस्ट 3 इंडिया की पिचों की वजह से वी डोंट वांट टू प्ले विद 4 फास्ट बॉलर वी हैव टू प्ले 3 Right. so I think we need to figure it out. So इसी note पे, you know, maybe we can focus our discussion a bit more on the playing 11 or the, you know, the top 13. अगर इस वक्त based on current evidence आप लोगों को select करनी पड़े आपकी playing 11 या playing 11 plus 2 reserves. Let's quickly have a discussion on that. Imam Fakhr opening. No debate, right? उसके अंदर तो I don't think there's any room for debate. Babar Azam comes 1 down, then comes the 2 down position. उसमें would you promote Rizwan? Rizwan seems eager for the 2 down role or the number 4 position. इसके बारे में क्या कहेंगे? आसिफ, I know आपका शायद थोड़ा सा difference इस point इस topic के ऊपर. I just think that, you know, Rizwan, we saw how he helped win the last match. He is a good closer. He has closed many matches for us, whether it's T20 format or ODIs, more T20. And I think one thing about him is he's got a very sensible head on his shoulders. You know, normally you think about finishing the match, you think about sloggers. Aapke Asif Ali, khush dil, chale to chale, na chale to, then you're a mess. Whereas someone like Rizwan has a sensible head. He rotates the strike. He keeps the ball, you know, the scoreboard ticking. The worst thing you want at the end overs is dot balls. You have that dot ball pressure. And Rizwan's very good at, you know, keeping it busy throughout. And I think he just has the maturity to close out a match much more so than some of these other guys who can come and hit 1 or 2 sixes, but don't have the experience of being there to the end. How many times have we seen in T20s? I know we keep going to T20 where Rizwan has been unbeaten. He knows how to finish a match as well. And so I think TK, he says he wants to be higher up. Everybody wants to be higher up, you know, too bad. I think his maturity level and his skill set is perfect for being there, not being the big hitter necessarily, but being there as the standard. You know, again, go to the 92 World Cup when Miadad was there. Miadad wasn't doing the big hitting. He was the stable guy on the side, rotating the strike, enabling the hitters to do their thing without worrying that everything would fall apart if they got out. That's what I think Rizwan is. He is your stable person who will help get you to the finish line, whether the other guy's hitting sixes or not. That's what I feel. So there's a little, थोड़ा सा difference है 2 down versus 3 down में in my. I would put it even lower than that. But उसमें मसला वही आ जाता है कि then situation के हिसाब से ये भी हो सकता है कि we are required to chase at I don't know 8, 9 and over, and so is he coming too late? जो आप बात कर रहे हो कि he is more of, you know, an anchor, singles ले लिए, doubles ले लिए. Having him come when the required run rate is 8.5, 9, I don't know if that's the right choice. नहीं अब जैसे अभी जो दोनों मैच
रिजवान ने फिनिश किए हैं, तो फखर ने इतना ज़्यादा रन कर दिए थे कि मैच ख़त्म ही हो गया था. रन रेट वाज डाउन टू 5 or 6 per over. तो रिजवान played sensibly कि भाई keep taking singles or odd boundary, he relax. मेरा ख्याल है कि नंबर 4 is okay, क्योंकि दूसरे एंड पे आपके पास हिटर चलते रहेंगे. You have to keep, तो there are pros and cons, but अगर आप वैसे भी देखो दुनिया भर में, तो नंबर 5 नंबर 6 में ना काफी बड़े हिटर्स हैं बाकी टीमों के पास. डेविड मिलर इज द बेस्ट इफ यू आस्क मी एट नंबर 6. मैच विनर रिली रूसो है 5-6. डेविड मिलर. फिर इंडिया में जडेजा और पांड्या आते हैं. अब इफ्तिखार इसलिए पीछे नंबर 5 इफ्तिखार इज गुड के ही कैन आल्सो रोटेट एंड हिट बिग. तो आई थिंक रिजवान मेरे हिसाब से तो नंबर 4 पे इज ओके. और दैट्स आई थिंक ही इज थिंकिंग द सेम, क्योंकि उसको हम 5-6 पे खिला रहे थे. तो जब अगर एवरेज 10 की हो गई या और ज्यादा, अगर वी नीड 100 रन्स इन 10 overs 12 overs, तो थोड़ा रिजवान कर सकता है स्ट्रगल. आई मीन इट्स it's debatable, but I think 4 will be fine for Rizwan. So no Abdullah Shafiq and no Shan Masood, right? Exactly. तो वही देखो, शान का I don't agree कि उसको चौथे पे खिलाया जाए. I just, middle order is a specialized area, और शान को बैकअप रख सकते हैं अगर if somebody like a reserve में, not even in playing 15. अगर इस तरह वर्ल्ड कप में he played in place of फखर, अगर टॉप 3 में से कोई इंजरी होती है, कि शान हैज एक्सपीरियंस ऑफ 100 लिस्ट ए गेम्स, की एवरेज इज लाइक 56 58, वन ऑफ द हाईएस्ट एवर. ही इज अ गुड एक्सपीरियंस प्लेयर एज अ बैकअप, मगर नंबर 4-5 पे नहीं. आई थिंक वो फिर वो यही होगा, वो वन डायमेंशनल प्लेयर हम भरे जाएंगे. इमाम भी का भी स्ट्राइक रेट थोड़ा ऊपर थोड़ा कम होता है. बाबर इज पिकिंग अप, आई हैव नो कंप्लेंट्स विद बाबर, ही इज फाइन. फिर आप पीछे रिजवान है और शान, अगर इनसे नहीं लगे तो फिर वो फिर स्लो हो जाता है गेम ना. So my problem with Sean is, and it's very harsh to say you judge someone by 1 innings or 2 innings here and there, because there's a whole body of work, but there's a lot of intent that can be shown. So against England, the test series recently, when we're trying to save a test match, you play the reverse sweep when everybody knows you can't play it. Abhi jo New Zealand ke khilaf test match, one-day match, they were chasing, and you score 1 run in 12 balls without showing any intent. And to me, that just speaks to, in my mind, and it's not even his fault. He keeps getting selected and dropped, but that to me looks like a batsman who is batting for himself, not for the team. Uski fielding bhi usse affected lagi thi, kafi fielding mein bhi bade lapse aate, which is maybe. And so, when you have someone who's thinking more of their own place in the team as a result of the selection, his fault or not, whatever, but they're thinking more of his own place than advancing the cause of the team. To me, that hurts. I would much rather have Abdullah Shafiq somehow squeezed in there some or the other than Sean. I think for me, Sean has lost my vote. He's a good guy. Wish him well. Let him do great in domestics. But for me, he doesn't play for Pakistan. He plays for himself just a little bit. अच्छा, चले टॉप 5 आपके हो गए more or less. I think इसमें हमें डिसएग्रीमेंट नहीं है. तो आप इफ्तिखार के बाद किसको आप रखेंगे? You bring in Imad, or Haris Sohail, assuming Haris Sohail is fit. यार जगह है, क्योंकि देखो रिजवान इज अ विकेट कीपर बैट्समैन, राइट? तो यू हैव अ रूम फॉर अनदर बैट्समैन. बॉलर अगर आप इमाद को भी मिलाते हो ना, तो यू वांट टू गो विद 2 स्पिनर, इमाद शादाब, लेट्स से. आई नो ही इज नॉट इन द टीम, बेस्ट केस सिनेरियो इमाद शादाब, देन यू हैव 3 फास्ट बॉलर, तो यू स्टिल हैव. So are you dropping Nawaz? Huh? Are you dropping Nawaz? वो खैर we will come to it. Yeah, इमाद और नवाज, you cannot, one of them should play. कोई बहुत लोग कहते दोनों खिला दो. I disagree with that. तो बहरहाल तो नंबर 6 पे ना प्रॉब्लम ये हो गया कि हमने अगेन उमर अकमल के बाद कोई रिप्लेसमेंट नहीं आई नंबर 6 की. ही वाज द बेस्ट नंबर 6 वी हैड. और हारिस सोहेल की फिटनेस का प्रॉब्लम है, वो डोमेस्टिक नहीं खेलता. मुझे उसके लायक भी गलत थे, वो मैच फिट भी नहीं है. तो और अगर आप मिडिल ऑर्डर में अगर जो 50 एवरेज का क्लब है डोमेस्टिक में, वो बहुत छोटा है. सऊद शकील इज अनदर नेम, मगर उसमें मुझे डर है कि नंबर 6 पे सऊद शकील का मुझे नहीं पता कैन ही मेंटेन द स्ट्राइक रेट. वही प्रॉब्लम होगा, क्योंकि नंबर 4 आगा सलमान का स्ट्राइक रेट हमने आज ही देखा, तो अच्छा है स्ट्राइक रेट. और खुशदिल बहुत अच्छा कर रहा था यार नंबर 6 पे. ही इज एवरेजिंग क्लोज टू 40, हिज स्ट्राइक रेट इज क्लोज टू 100.
वही किया कि T20 में उसने स्कोर नहीं किया तो हमने उसे ODI से भी निकाल दिया। खुशदिल की बॉलिंग करा लेता है आगा सलमान की तरह। I mean, आगा सलमान को भी आप पार्ट टाइम बॉलर ही कहोगे ना, तो उतने तो आपके खुशदिल भी करा लेगा। Exactly. So So number these are 6 people who aren't in the team. You know, Khushdil is not there. Imad, I love him, but he's not there. Yeah. So, you know, I mean, Yeah, we're hoping कि इस series के बाद कुछ changes हो. I mean, we're not asking for drastic changes. We're asking for tweaks essentially. So, अच्छा, let's talk about Imad versus Nawaz. We don't have much time left. We'd like to wind up in the next 5 minutes or so. So, इसके बारे में क्या कहेंगे? Would you say Nawaz is a better bowler and Imad is a better batsman? या किस तरह आप देखते हैं इस डिबेट को? मेरे ख्याल से तो कोई डिबेट ही नहीं है। इमाद परफॉर्मेंस की वजह से बाहर नहीं है। उसकी जो बैटिंग एवरेज है, मैं किसी ने निकाला था कि he is averaging 42 with strike rate of 110. He has the highest strike rate at that number with that many runs, above 40. 45 को उसने मिस कर दिया, otherwise he would have been same category. वो जो दूसरी लिस्ट जो है 45 है 90 वाली। इमाद को तो परफॉर्मेंस से बाहर नहीं हुआ है और उससे हमें प्रॉब्लम भी हो रही है कि पावर प्ले में वी आर लीकिंग रन्स। शाहीन विकेट लेता है मगर दूसरे एंड पे इमाद और आमिर जब कराते थे तो इमाद यूज्ड टू ब्लॉक रन्स इन पावर प्ले। तो टीम सफर कर रही है। आई होप के ही गेट्स इन सैनिटी प्रिवेल्स। इमाद नवाज मेरे लिए इज अ बैकअप फॉर इमाद। अगर इमाद इज नॉट अवेलेबल देन यू प्ले नवाज। तो इमाद को अगर आपने T20 में शामिल कर लिया और उसकी वो बुरी परफॉर्मेंस तो नहीं थी अभी जो उसने खेली है। इनफैक्ट एक गेम तो उसने शादाब के साथ काफी लंबी पार्टनरशिप भी थी T20 में। सो आई डोंट सी अ रीजन व्हाई those non-cricketing issues should prevent him from coming back to the ODI I mean, drop a sawal. No offense to Nawaz, he's a good player, but to answer that question, Imad is a better batsman, he's a better bowler, he's a better fielder, he's a better energy player. He wins. You know, let's go back again. 2019 ODI World Cup against Afghanistan. It was a lost cause. Imad carried us to victory. He has experience of leading us to victory in tense matches, which Nawaz simply doesn't have. Imad is an aggressive wicket-taking bowler. If he gives up a few runs here and there, I don't mind because he's taking wickets. He's hunting wickets, whereas Nawaz is more of a stopgap. And we all know Babar barely uses Nawaz as a bowler. We've seen that so often in the last year. Imad is an attacking bowler who can be used at the beginning, he can be used in the middle, he can be used at the end, and he can bat anywhere. He's versatile. He's a great fielder. He has energy. He gets the whole team riled up. It's a no-brainer from every angle that you look at it, except for the non-cricketing ones, which that's beyond our scope. We can't do anything. अब तो collegiality के अंदर भी कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो बड़ी झपियां और इस तरह की वो इंटरव्यूज ले रहा है बाबर की। So अब तो I think that shouldn't be a concern as well. So let's see. I mean, respectfully, everybody is up in Babar's. You know what? You know that's the thing. That's the way to get selected. Apparently, it seems like. Yeah. But again, पाकिस्तान टीम के साथ कभी भी कुछ भी चेंज हो सकता है। जिस तरह हम कहते रहे कि यार इफ्तिखार को वापस लाओ नहीं हुआ। फिर all it took was one injury and he's back. So I mean, Al-Rahman, I feel like has not earned a place in the World Cup. TK, when he's had opportunities, he's been okay. There are people who are seasoned, experienced, been there, done that outside of the subcontinent, who we know have done it. And Al-Rahman doesn't have those credentials. I just don't think he's ready for it. Yeah. अच्छा, उसके बाद फिर हमारे बॉलर्स आते हैं। एक पोजीशन उसकी आ जाती है शादाब की। शादाब वर्सेस उसामा मीर। Would you continue with Shadab because of his experience? या अभी अगर फॉर्म उसकी इस तरह रहती है तो हो सकता है उसामा मीर को डाल दिया जाए। बैटिंग थोड़ी सी हमारी सफर होगी, बट मे बी उसामा could be a better wicket taking option. यार शादाब का भी वही मसला है। हर बड़े टूर्नामेंट से पहले ना, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम कहते हैं यार ये क्या कर रहा है, इसकी फॉर्म नहीं है, ये इंजर्ड है। मगर somehow he's a big match player like Imad. India against India, I don't know how he did it. मगर he bowled so well in the World Cup. So Shadab is a big match player, and in like a knockouts या बड़े टूर्नामेंट्स में ना, साउथ अफ्रीका वाले गेम में वर्ल्ड कप में it was a pretty much knockout. He just came out of blue with इफ्तिखार and match winning knock. तो शादाब का ये है कि he's a big match player. शादाब हो गया या इमाद हो गया, इनमें क्वालिटी है। ये है कि उसकी फिटनेस के प्रॉब्लम है, तो उसामा को खिलाना जरूरी है। इंडिया में अगर आप दो स्पिनर टीम में खेल लेंगे जिस तरह इमाद या नवाज या शादाब, तो you need somebody else in the team, in the squad. तो उसके लिए उसामा मीर
तो आप रिजर्व में एटलीस्ट उसको रख लोगे. आई थिंक प्लेइंग 11 में तो इतने सारे स्पिनर नहीं हो सकते आपके, बट ये है नहीं, इंजरी के लिए अगर शादाब इंजर्ड होता है तो आई थिंक यू डोंट हैव एनी ऑप्शन बिसाइड उसामा मीर. तो लेके तो जाना चाहिए उसको, लेके जाना चाहिए, बल्कि उसे खिलाना चाहिए ताकि ही गेट्स रेडी. Shadab Right. will be fine. He has a lot of experience. Yeah, I mean, मेरा भी यही है कि you look at Shadab and the way he's been playing recently, like he's just a shadow or a shell of himself, and you think, you know, how can we play him? But if you use that same logic for Imad, you have to use the same logic for Shadab. When the going gets tough, he rises to the occasion, and he has done it again and again and again. He has proved all of his doubters, including myself, wrong. So he deserves that chance. But I do think it's great to have Osama there, just to let Shadab know that you may be vice captain, but your place is not secure. You need to keep performing, because if not, these young guys are here to replace you. Maybe that'll raise his level even more, because you know, nobody should have automatic selection except your captain. Just being vice captain should not give you automatic selection. We saw Sean Masood was vice captain, and where is he now? So, you know? नहीं, और प्रॉब्लम इसलिए भी हो रहा है क्योंकि सबको पता है शदाब की उंगली में फ्रैक्चर है वर्ल्ड कप से, उसके शोल्डर में भी पेन है. अब हमारे यहाँ कल्चर नहीं है रोटेशन का या रेस्ट का. लोग डरते हैं कि मैं रेस्ट करूंगा तो बाहर हो जाऊंगा, वरना शदाब कुड हैव बेनिफिटेड फ्रॉम द रेस्ट. अब वो क्रिकेट बहुत ज्यादा खेल रहा है इंजरी के साथ. आई होप कि वर्ल्ड कप तक फिट रहे, वर्ल्ड कप में इंजर्ड होकर बाहर ही ना हो जाए ना. तो ये प्रॉब्लम ठीक है. इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम तो आप इसको वाइंड अप करते हैं. तो अब आखिर में बस फिर बॉलर्स की बात आ जाती है. बॉलर्स तो हमारे मोर और लेस वही हैं, नसीम, शाहीन और हारिस रऊफ. उसमें जमान इज वन guy which we feel should be tried out just to see after death over bowling. What about Wasim Junior? Wasim Junior is in the current squad. He hasn't played. Is he someone that you would sort of try again as a backup? कि अगर इन तीनों में से कोई नहीं चलता, I'm sure we're not dropping Shaheen, of course. But कितने बैकअप रखेंगे यार? 3 खेलेंगे, एक जमान, फिर वसीम को भी रखेंगे क्या? जमान टीम में नहीं है ना? नहीं, I know. So I agree कि अभी जिस तरह the team is, look, there's a team we have, उसमें I think you have to rotate for the sake of fitness. Look, we might have won the World Cup final if Shaheen was fit, right? So fitness is absolutely number one, and so rotate just for that sake. And then Wasim Jr., if he's there, absolutely play him. Ihsanullah is in the ODI team, right? Ihsanullah ने 2 मैचेस खेले हैं, अभी इतना परफॉर्म नहीं किया. उसने कहा बार-बार पिटी है. But Wasim Jr. should absolutely get a chance, because I think he is higher on the ladder than Ihsanullah. He is actually your first choice replacement for any of those 3 right now. और डेथ बॉलिंग में भी जो यॉर्कर्स कराता है, और अभी डेथ बॉलिंग में we went for almost 100 runs in the last ODI in the last 10 overs. So we need someone. वो तो नसीम ने थोड़ी इकोनॉमिकल बॉलिंग करा ली, वरना और काफी बुरा हाल होना था. So मगर मुझे लगता है कि अगर ये लोग फिट है ना, नसीम, शाहीन और हारिस, अगर तीनों, हारिस अगर फिट नहीं होगा तो ही कैन नॉट बोल 150. अगर 140 करेगा, 145 पे भी उसकी पिटाई होती है. ही हैज टू बोल फास्ट. तो ये 3 तो खेलेंगे अगर दे आर फिट. अब आप कितने बॉलर लेके जाओगे? 5 लेके जाएंगे क्या? फिर एक में अच्छा मोहम्मद वसीम और जबान दोनों तो नहीं जाएंगे ना. अब ये तो टाइम कम रह गया, तो शायद वर्ल्ड कप में मोहम्मद वसीम के एक्सपीरियंस की वजह से मोहम्मद वसीम को ले जाते हैं. तो आई थिंक मोहम्मद वसीम विल बी बैकअप, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया तो है नहीं कि आप 4 खिला सकते हो फास्ट बॉलर ना. तो द क्वेश्चन इज किसको आप रखोगे? आई थिंक मोहम्मद वसीम के एक्सपीरियंस की वजह से वही जाएगा इन 3 के बाद. वही है, जमान को आपने ओडीआई में ट्राई नहीं किया अभी. वही है कि अनलेस आप किसी सीरीज में, आप आई डोंट नो, अभी एशिया कप का भी नहीं पता, होती भी एशिया कप नहीं होती, और उसके अलावा फिर आपका अफगानिस्तान एक सीरीज है. तो वी डोंट हैव मेनी मैचेस रिमेनिंग. तो आई एम होपिंग उसमें एटलीस्ट आप जमान को ट्राई कर लो भी. ठीक है, अगर नहीं हुआ तो वी नो कि ये टीम टॉप तो है. एंड और अगर नहीं होता, अगर ट्राई, तो फिर जाहिर है इट्स टू रिस्की. आप उसको एंड वर्ल्ड कप में तो नहीं लेके जाओगे. तो फिर आपका वही है कि वसीम जूनियर देन बिकम्स योर बैकअप. एग्जैक्टली. ठीक है जी. अच्छा जी, थैंक यू सो मच व्यूअर्स. वंस अगेन वी होप यू एंजॉयड our comeback episode. तो we are hoping अभी 3 हमारे ODI matches रहते हैं. Pakistan wins comprehensively, but more importantly for us, this series is a preparation for the World Cup. So we hope this serves as a good preparation for us, and we are able to make some proposed changes जो कि हमारे panelists ने बात की है. Iftikhar gets a run, Wasim Junior gets a game or 2, और हम further improve करें going towards the World Cup. कोई final parting thoughts, Mirza या आसिफ?
या दूसरा एक हम लोग बात कर रहे थे, आई थिंक वो बाबर का जो इशू है कैप्टनसी का वो तो अब खत्म ही हो गया, तो आई थिंक ही विल बी कैप्टन टिल द वर्ल्ड कप, और वो डिबेट अब खत्म हो जानी चाहिए उसकी कैप्टनसी की भी और उसकी स्ट्राइक रेट की। इतने क्लोज टू द वर्ल्ड कप तो आई थिंक कोई इस पे क्वेश्चन भी नहीं होना चाहिए, एंड आई थिंक कोई इतना खास अभी फिलहाल हमारे पास शॉर्ट टर्म में अल्टरनेटिव भी नहीं है, सो my closing thought is Fakhr Zaman. Zaman जिंदाबाद. I think that's the World Cup. Yeah, I mean X factor है हमारा. X factor. Fakhr Zaman या चाचा. Babar of course. बाबर तो वो of course वो तो खैर. चले जी, ओके जी, इसके साथ ही फिर हम काम करते हैं. थैंक यू सो मच, और होपफुली हम आपके साथ जुड़े रहेंगे, फ्यूचर एपिसोड्स भी आपके सामने पेश करके रहेंगे. ओके जी, थैंक यू वेरी मच. पाकिस्तान जिंदाबाद.